Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I will be discussing PYQs on probability and statistics from JEE-Main previous year questions. So let's start. So let's start. So let's start with first question. It is given to you that we have assumed one S equal to some matrix Aij, where my Aij can take elements from 0, 1 and 2. And my ij is belonging to 1 to 2, which implies I and j can take only two values, either 1 or either 2. So this is my sample space and my a belongs to this region. So I have to calculate the probability कि अगर मेरा a इस region में belong करता है, so उसकी probability क्या है, I need to calculate. So let me take the pen. बेसिकली इसमें हम लोग जैसे मैट्रिसेस से डील करते हैं वैसे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा. अपने को जो मैट्रिसेस के चार एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम आइदर 0 और 1 और 2. दीज आर माई फोर एलिमेंट्स. सो मेरे को पता है कि अगर मैं एक एलिमेंट को आई कैन चूज इट यूजिंग थ्री वेज. सो आई कैन टेक ए इन थ्री वेज, सिमिलरली आई कैन टेक बी इन थ्री वेज. सो फॉर ऑल द फोर एलिमेंट्स I have to multiply it by 3. So 3 into 3 into 3, I have to do it 4 times. So I am getting my sample space as 81 because I am getting this thing to be 3 times. So my sample space is 81. Now I need probability. For probability, I need something like NA upon NS, where my NS is the total sample space and NA is the space which I want. So if A is invertible, then I know that मेरा कोई भी जो मैट्रिक्स होता है वो तभी इन्वर्टिबल होता है जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, मतलब when determinant is not equal to zero, because A inverse is adjoint A upon det A, adjoint A upon det A, and so inverse is defined only when my what we say determinant is not equal to zero. So अगर मैं डिटरमिनेंट जीरो होगा तो मैं A इन्वर्टिबल नहीं होगा बेसिकली. नाउ अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे मैं m की बात कर रहा हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ m जीरो होगा. डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज ad माइनस बी सी. तो अगर ad माइनस बी सी जीरो है तो इसका मतलब ad इज इक्वल टू बी सी. ठीक है. लेकिन मेरे को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि m इज इन्वर्टिबल. अगर m इन्वर्टिबल है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो नहीं होना चाहिए. बट मैं बस सॉल्व करके देखता हूँ कि जीरो करने से क्या होता है. तो यहाँ से मुझे मिलेगा ad इक्वल टू बी सी इक्वल टू जीरो. तो देयर आर फाइव वेज जिससे मेरा एडी जीरो होगा. आइदर मैं जीरो जीरो ले लूं, क्योंकि मैं एलिमेंट्स तीन तरीके से ले सकता हूँ. आइदर आई कैन टेक जीरो, और आई कैन टेक वन, और आई कैन टेक टू. ओके, दीज आर माई थ्री फोर वेज. सो एडी क्या क्या हो सकता है? एडी कैन बी जीरो जीरो, इट कैन बी जीरो वन, इट कैन बी जीरो टू, इट कैन बी वन जीरो, इट कैन बी टू जीरो.
देयर आर 5 ways in which I can select my AD, बिकॉज मैं जो मेरा कोई भी एलिमेंट है मैं उसको सिर्फ तीन ही तरीके से ले सकता हूँ, आइदर आई कैन टेक 0, और आई कैन टेक 1, और आई कैन टेक 2। सो ये मेरे एडी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो सिमिलरली देयर आर 5 ways when BC is equal to 0. So AD equal to BC is equal uh, सो बेसिकली एडी के मेरे पास 5 ways होंगे, सिमिलरली मेरे पास बीसी के 5 ways होंगे। 5 × 5 25 हो गए। वाई? क्योंकि एडी को मेरे को चुनने के मेरे पास 5 तरीके हैं, सिमिलरली बीसी को चुनने के भी मेरे पास 5 तरीके होंगे। यही 5 तरीके होंगे, लेकिन वो बीसी के लिए होंगे और ये एडी के लिए है। तो एडी इक्वल टू बीसी, मैं अभी वो वाले केस निकालता हूँ जहाँ पे मेरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, उसको मैं टोटल केस से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जिससे कि मेरे को इन्वर्टिबल वाले केस मिल जाएंगे। फॉर नाउ आई एम कैलकुलेटिंग दोज केसेस जहाँ पे मेरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं हो सकती। वो इन्वर्टिबल कब नहीं होगी? जब मेरा एडी और बीसी बराबर रहेंगे, और एडी और बीसी बराबर है, इम्प्लाइज एडी इज इक्वल टू बीसी, इम्प्लाइज एडी इज इक्वल टू बीसी। सो जो मैंने एडी के लिए कंपोनेंट्स, अगर मैं यही कंपोनेंट्स बीसी के भी ले लूंगा, तो उससे क्या होगा, एडी और बीसी बराबर हो जाएंगे, तो वो चीज जीरो हो जाएगी। तो एक केस तो मेरा ये बना कि उन पांचों में से मैं कोई सा भी ले रहा हूँ, और सिमिलरली यहाँ पे भी उन्हीं पांचों में से कोई सा भी ले रहा हूँ, तो वहां से मेरे पास 25 वेज आएंगे। सिमिलरली हो सकता है मेरा एडी, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एडी और बीसी सेम 0 0 होने चाहिए। अब मैं एडी और बीसी को 1 भी ले सकता हूँ, और मैं 2 भी ले सकता हूँ। तो ऐसे करके यहाँ से मेरे पास तरीके आएंगे, फिर यहाँ से मेरे पास तरीके आएंगे। तो जब मैं सबको ऐड कर लूंगा, सबको ऐड करके मेरे पास फाइनल आंसर जो 31/81 आएगा। ये वो वाले तरीके हैं जहां से मेरी मैट्रिक्स जो है नॉन इन्वर्टेबल है, मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। ये वो वाले वेज हैं। बट मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ये बोला था कि आई नीड माई मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल, एम इज इन्वर्टेबल, दे आर सेइंग। सो सिंस एम इज इन्वर्टेबल, so we can say that we need to subtract it with 1, 1 minus 31/81, this is 51/81। ठीक है? सो ऐसे निकलेंगे मेरे आंसर्स बेसिकली। तो ये एक तरीका था, और तो इसमें क्या हो सकता है? हाँ, मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, और तो कोई सॉल्व करने का इसको तरीका है नहीं। सैंपल स्पेस से मैंने टोटल एलिमेंट्स निकाले 3 की पावर 4 से, और फिर जो मेरे को दिया हुआ था वहां से मैंने एन निकाला। एम बिलोंग्स टू एस एंड एम इज इनवर्टिबल। एम इज इनवर्टिबल इम्प्लाइज मेरा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, बिकॉज मेरे को पता है ना, मैक्सिमम टू मल्टीप्लाई करके आई विल गेट 4 ओनली। either it can be 4 minus 0, so AD minus BC either can be equal to 4, or it can be equal to 4 minus 1, that is 3, or it can be equal to 4 minus 2, that is 2, or it can be equal to 4 minus 1, that is 1. 4 minus 3, sorry, that is 1. एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू 4 - 4, क्योंकि अगर 4 - 4 होगा तो वहां से जो मेरे पास आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट जीरो कर देगा, तो मेरे को वो चीज नहीं चाहिए। तो मेरे पास ये चार केसेस थे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जहाँ पे मेरा एक चीज जीरो होगी। अगर एक चीज जीरो होगी तो दूसरी चीज मेरी 4 होनी कंपलसरी है। तो वो एक केस ये रहा। सिमिलरली दूसरा केस, जब मेरा कोई एक 1 हो जाएगा, जो मेरा ये वाला केस है, केस 2, सिर्फ केस 3, फिर केस 4। ऐसे ही मेरे पास चार केस आएंगे। इन चारों केस को ऐड करके मेरे पास 31/81 आ रहा है, इसको मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। लेट अ die be rolled n times, let the probability of getting odd numbers 7 times be equal to the probability of getting odd numbers 9 times। मतलब मैं एक डाई को 9 टाइम्स रोल कर रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि उस डाइस पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं 7 बार रोल करूंगा और मैं 9 बार रोल करूंगा तो सेम है। मतलब मैं डाइस को 9 बार रोल करके छोड़ रहा हूँ और 7 बार रोल करके छोड़ रहा हूँ, तो उस रोलिंग करने में जो मेरी प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर की, वो सेम आ रही है। तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, if the probability of getting even numbers twice
is k upon 2 power 15, then k is equal to what basically. ठीक है, तो बेसिकली मेरे को बोला है कि इवन नंबर ऑफ इवन नंबर चाहिए मेरे को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ट्वाइस, वो k अपॉन 2 पावर 15 है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो मुझको दिया हुआ है मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। They are saying me that the probability of getting an odd number 7 times is equal to probability of getting odd number 9 times। तो यहाँ पे मैं सिंपल लगाऊंगा मेरा रैंडम वेरिएट वाला फॉर्मूला, NCR P पावर R Q पावर N माइनस R। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा NCR है, ये तो मेरा कॉम्बिनेट्रिक्स से आता है ना कि N इज टोटल नंबर ऑफ वेज एंड R इज द फेवरेबल वेज। P is my favorable probability and Q is not favorable। So यहाँ पे total number of ways तो N है, तो NC7 हाफ पावर 7 हाफ पावर N माइनस 7, क्योंकि मेरे को पता है एक डाइस है, तो डाइस में 3 ऑड नंबर होते हैं, 3 इवन नंबर होते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऑड नंबर की भी हो जाएगी 3/6 और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, तो वहां से ये हाफ आ जाएगा बेसिकली। तो NC7 हाफ पावर 7 एंड हाफ पावर N माइनस 7 इज इक्वल टू NC9 हाफ पावर 9 हाफ पावर N माइनस 9। तो यहाँ से आई नो आई कैन सिंपली equate NC7 equal to NC9। Why? Because half power 7 and half power 9. From here I will get I will be getting a 4. So let me take my 4 here, and now I can simply do what? I know that if I will, oh, I will not take my 4 here. I can do it like this only, and then I will take this 4 inside. So I will be getting this thing plus more 2 more 2's. So here it would become n minus 9 plus 2. So it would become n minus 9 plus 7, n minus 9 plus 2, which is n minus 7. So this will cancel with this thing. So that's why NC7 is equal to NC9. And we know that whenever in probability two combinatorics are equal, this implies n is equal to the sum of 7 and 9, which is 16. So using the given information, we calculated the value of 9, which is coming out to be equal to 16. So this is my first outcome from this question. Now what I want the probability of getting even number twice. So again simple है, मेरे को पता है कि मेरे को n पता चल गया, तो मैं सिंपल रैंडम वेरिएट वाला फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा, NC2, बिकॉज मेरे को 2 बार चाहिए इवन नंबर, ट्वाइस मतलब 2 times, twice मतलब 2 times. So NC2 half power 2 and half power 16 minus 2. From here I will get 16C2 is nothing but 16 factorial upon 16 minus 2, 14 factorial into 2 factorial. So 16 into 15 upon 2 into 1 upon 2 power 16. So यहाँ से अपने को पता है मेरे को 2 power 15 चाहिए, so दो 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, so I will be getting how much? 16 upon 2 is 8 and 8 upon 2 is 4. So 4 into 15 is 60. So 60 is my final answer. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपको रैंडम वेरिएट वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर वो पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस एनसी थिंग, बिकॉज दिस इज, अगर आप यहाँ पे गलती कर दोगे और आपने यहाँ से एनी गलत निकाल लिया तो फिर आगे भी आपका आंसर गलत ही आएगा। तो जो अपने को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अपन ने उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके एन की वैल्यू निकाल ली, एंड देन जो मुझसे पूछा था वो मैंने सिंपली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। Let capital N denote the sum of the numbers obtained when two dice are rolled। अब मैं यहाँ पर दो डाइस को एक साथ रोल कर रहा हूँ और उन दो डाइस के जो फेस पे जो सम आता है उसको मैं नोट कर रहा हूँ एज कैपिटल N। If the probability that 2 power capital N is less than n factorial is m by n, where m and n are co-prime, m and n are co-prime implies इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, देन 4m minus 3n is equal to what? तो मेरे को पता है कि जो मेरे जब मैं दो डाई को साथ में रोल करूंगा तब मेरा मैक्सिमम सम जो है वो 12 आ सकता है,
क्योंकि 6 + 6 = 12 एंड मिनिमम सम 2 आ सकता है फॉर 1 + 1. ठीक है. एंड सिंस दे आर सेइंग 2 power n इज लेस देन n फैक्टोरियल, तो जो मेरा सम है वो अगर मैं 2 लूंगा तो आई विल बी गेटिंग 2 power 2 less than 2 factorial is 2 only. 4 is less than 2, so this thing is wrong. So my n can't be equal to 2. Now let's check for 3. 2 power 3 is less than 3 factorial, which is 6. So again, 8 is less than 6. This is also not possible. So n cannot be equal to 2 and 3. N cannot be equal to 2 or 3. Now let's check for n equal to 4. So 2 power 4 is less than 4 factorial. 2 power 4 is how much? It is 16, and 4 factorial is 24. So now it is correct. So basically now you will get correct values. That's why I can say that my n lies between 4 and 12. My n value lies between 4 and 12. So n is from 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 12. Okay. Now what I need is I need the probability. If the probability this thing is so is m by n, then मेरे को m और n की वैल्यूज बतानी है. ठीक है. तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं 4 से लेकर 12 तक सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं. इससे बेटर क्या होगा, आई शुड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द रेस्ट 2, which means for 2 and 3, and then I can subtract it with 1 so that I can get my final answer. क्योंकि अगर मैं इन सबके लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. इसलिए टू रिड्यूस माय टाइम आई विल कैलकुलेट फॉर n इक्वल टू 2 एंड फॉर n इक्वल टू 3. ठीक है. नाउ आई नो n इक्वल टू 2 इम्प्लाइज मैं दोनों डाइस पे सम 1 आना, दोनों डाइस का जो रोल करने के बाद जो आएगा वो 1 आना चाहिए. सो दिस इज ओनली वन केस आउट ऑफ टोटल 36 केसेस. सो इसके प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36. सिमिलरली n इक्वल टू 3 कब आ सकता है, इधर एक डैश पे 2 आए और दूसरे डैश पे 1 आए, या फिर पहले डैश पे 1 आए दूसरे डैश पे 2 आए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/36. So these are the two possible cases when this condition is neglected. So just add these two cases, you will get 1/12. Now to satisfy this condition, you need the probability. So subtract it with 1, you will get your final answer. And you can see here that 11 and 12 are co-prime numbers because they have only one as common factor. So you need to calculate 4m minus 3n. Simply put on the values and you will get your final answer. 4 into 11 minus 3 into 12, 44 minus 12 is equal to 8. This is my final answer. ठीक है. Moving ahead, if the probability that the random variable x takes values small x given by p capital X equal to small x equal to this thing, where k is a constant, then then p of x greater than equal to 2 is equal to what? मुझसे ये पूछा है. अगेन सेम वही क्वेश्चन है कि
सो अगेन द सेम क्वेश्चन ऑन रैंडम वेरिएट। बेसिकली मेरे को पता है कि जो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। सो अब मेरे को बताना है कि अगर मैं वैल्यू x लेता हूँ, उसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी दी हुई है समथिंग लाइक k x+1 पावर 3 - x into 3 power - x। तो अब मेरे को k की वैल्यू नहीं, मेरे को p x greater equal to 2 की वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो मेरे को पता है सिग्मा तो इसका 1 ही होगा क्योंकि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं को x ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए निकालने से बेहतर है कि मैं x लेस देन 2 का वाला निकाल लूं और इसको 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं बेसिकली। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे करूंगा कि मेरे को दिया हुआ है कि एक x के लिए आई एम गेटिंग k टाइम्स x+1 into 3 power - x। ये आ रहा है मेरे पास। तो मैं एक x के लिए जब मैं सम करूंगा तो मेरे को ऐसे मिलेगा, फॉर x इक्वल टू 1 आई विल गेट 1 + 1 विच इम्प्लाइज 2। पहले x इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। x इक्वल टू 0 के लिए आई विल गेट 1 into 3 power - 0 which is 1, so here it is 1। Then for x equal to 2, x equal to 1 I will get 2 into 3 power - 1। Then for x equal to 2 I will get 3 into 3 power -1 3 power - 2। Similarly till infinity the sum would be equal to 1 because we know that Venn diagram जब भी मैं बनाता हूँ तो इस पूरी की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। ठीक है, so this thing is equal to 1। now this thing is, just simplify this thing, you will get 1 plus 2 by 3 plus 3 upon 3 square plus dash 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 up to infinity। ठीक है, नाउ अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, आई एम डिवाइडिंग इट बाय 3 बिकॉज टू गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अ जीपी। मेरे को यहाँ पे एक जीपी मिल गई जिसको मैं देख सकता हूँ, जीपी तो क्या नहीं मिली बट आई कैन सी दैट जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तब मेरे को जीपी मिल जाएगी। ओके, सो ऐसे करके मैं यहाँ से s की फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2s/3 equal to 3/2, and from here I'm getting the final value of s as 9/4। ठीक है, ये सिंपल अपन लोग एपीजीपी में सॉल्व करते हैं, वैसे अपन ने सॉल्व किया इसको। पहले मैंने s निकाला, फिर मैंने s/3 निकाला, जब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया वहां से मेरे को s की वैल्यू मिल गई। ठीक है, so s equal to 9/4 I got, and I know that this thing is my s। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 9/4। सो k इंटू 9/4 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई 4/9। ठीक है, तो अब बेसिकली मेरे को मिल गया p x इक्वल टू, x का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 4/9 x+1। बेसिकली जो मेरे को इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है दैट इज जस्ट टू कैलकुलेट द गिवन कॉन्स्टेंट्स इनटू 3 power - x। ठीक है, तो ये मुझे किसी भी x के लिए फॉर्मूला मिल गया। अब मुझसे x ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए पूछा है तो मैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए निकाल लूंगा, वो फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो x इक्वल टू 0 के लिए कितना होगा, x इक्वल टू 0 के लिए ये आएगा 4/9। ठीक है, क्योंकि 3 power 0 1 हो जाएगा और यहाँ से भी मेरे को 1 ही मिलेगा, प्लस x इक्वल टू 1 के लिए कितना आएगा 4/9 इंटू 2/3। सो यहाँ से कितना हो गया ये, दिस थिंग इज इक्वल टू 4/9 into 1 plus 2/3 which is 5/3। So यहाँ से I can say that this thing is equal to 20 upon 27। So this thing is equal to 20 upon 27। So 1 minus 20 upon 27 जब मैं करूँगा तो यहाँ से मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा 20 upon 27, so I will get 7 upon 27। So this is the probability for my p x greater than equal to 2।
ठीक है। सो ये मैंने निकाला और इससे मेरा सॉल्व हो गया ये। ठीक है। तो बेसिकली वही चीज आपको देखनी है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दी है वहां से जो आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, पहले वो सॉल्व करके वो निकालो। पहले जो मेरे को दिया हुआ था मेरे को पता था, मैंने इस चीज का यूज किया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है। वहां से मैंने सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल ली। और जब मेरे पास के की वैल्यू आ गई तब तो फिर मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे से बोला गया है कि आई नीड टू कैलकुलेट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट व्हाट आई नो इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए जब मैं निकालने जाऊंगा तो फिर वो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। इसलिए व्हाट आई डिड इज आई कैलकुलेटेड फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 एंड देन आई सब्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम 1 so that I will get my final answer as 7/27. ठीक है। So now take a look at it. So moving ahead, in a bolt factory, machines A, B, and C manufacture respectively 20%, 30%, and 50% of the total bolts. Bolts are that which we use in mechanical industry for, for making cars and so on. So of their output, 3, 4, and 2% are respectively defective bolts. Defective bolts. Basically, एक बोल्ट फैक्ट्री में बोल्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसमें से ए बी एन सी तीन मशीन हैं। ए मैन्युफैक्चर करती है 20%, बी मैन्युफैक्चर करती है 30%, एंड रिमेनिंग 50% इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो अब मेरे को ये बोला गया है कि उन तीनों मशीन में से ए का 3%, बी का 4% एंड सी 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। Then a bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found defective, then the probability that it is manufactured by machine C is what? तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि दे हैव टोल्ड मी दैट जो मैंने बोल्ट निकाला है दैट इज डिफेक्टिव। अब मेरे को बताना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट सी से आया होगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर लेता हूँ। मेरे को पता है पी ए इज 20%, सो 20/100 is 2/10. Similarly, PB is 30%, which is 3/10, and PC is 50%, which is 50/100, so 5/10. ठीक है। नाउ मेरे बॉल डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मेरे बॉल डिफेक्टिव है और वो मशीन ए से आए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3%, विच इज 3/100. सो 3/E मीन्स माई बॉल्स आर डिफेक्टिव, बट मेरे को दिया हुआ है कि वो ए ने मैन्युफैक्चर की। E/B implies defective balls manufactured by B. E/C implies defective balls manufactured by machine C. So ये है 3%, ये है 4%, and this thing is 2%. So I've calculated all things, and now I need to calculate P of C by E, which implies मेरे को ये दिया हुआ है कि मेरा बोल्ट तो डिफेक्टिव है, बट वो सी वाली जो मशीन उसने मैन्युफैक्चर किया है मेरे को वो बताना है। ठीक है। तो ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था इसका, PE by C into PC. This is the formula for my conditional probability. So यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा PC by E है दैट इज इक्वल टू यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा PE by C into PC अपॉन टोटल।
टोटल मतलब वही पी ई बाई ए इंटू पी ए प्लस पी ई बाई बी इंटू पी बी प्लस पी ई बाई सी इंटू पी सी। अब मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है, मेरे को सारी चीज पता है। आई जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड आई विल गेट माई फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यू जस्ट नीड टू नो दिस फॉर्मूला ऑफ पी सी बाई ई। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पी ई बाई सी एंड पी सी बाई ई। पी ई बाई सी implies that my balls are manufactured by machine C and they are defective। मतलब पहले कंडीशन ये दी हुई है मुझे कि बॉल्स जो है वो कंपनी सी ने मैन्युफैक्चर किए हैं। उसके बाद ये है कि मशीन सी ने मैन्युफैक्चर किए हैं। अब मेरे को बताना है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट है कि सही वाला बोल्ट है। तो पी ई बाई सी रिप्रेजेंट्स दैट, बट पी सी बाई ई this thing tells that I know that my bolt is defective, but now I need to tell whether that bolt is manufactured by machine A or machine B or machine C. So these two things are different. What is asked to us in the question is PC by E. And to calculate PC by E, I want PE by C. So the details of all these three things have been given to me in the question itself. PE by C, PE by A, and PE by B. These three details are given to me in the question itself. And using this formula, I can easily calculate probability of bolt manufactured by machine C. So in this way, I can calculate this probability. So this was my question number 4. Moving on to the next one. 3 dice are rolled. If the probability of getting different numbers on the 3 dice is p by q, where p and q are co-prime, then q minus p is equal to what? सबसे पहले को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम इम्प्लाइज कि उन दोनों नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज ओनली वन। मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर जो है वो ओनली वन होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट दोस टू नंबर्स आर को प्राइम। सो दे आर आस्किंग मी दैट आई हैव बीन रोलिंग 3 डाइस साइमल्टेनियसली, एंड उन जो 3 डाइस को मैंने रोल किया उन तीनों डाइस पे डिफरेंट नंबर्स आए, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है। दैट थिंग इज इक्वल टू पी बाई क्यू। सो आई नीड टू टेल पी माइनस क्यू। ओके, सो बेसिकली जब मैं 3 डैश को रोल करता हूँ तब मेरे पास टोटल पहली डैश पे आ सकते हैं 6 नंबर्स। सिमिलरली सेकंड डैश पे आई कैन गेट 6 नंबर्स, एंड ऑन द थर्ड डैश ऑल्सो आई विल गेट 6 नंबर्स। सो इन टोटल आई हैव सैम्पल स्पेस ऑफ 216। इन दिस सैम्पल स्पेस व्हाट आई वांट इज, आई वांट कि जो पहले वाली डैश पे नंबर आया है वो दूसरे वाली डैश पे ना आए। So for first dice, the probability is 6, but for second, it will reduce to 5, and for third, it will reduce to 4. Why? Because the number which has been occurred on dice A can't occur on dice B. So let's say dice A पे number आया 3. So second dice पे I have only 5 choices from 1 to 4, 5, and 6. Similarly, third dice पे I have only 4 choices. So this is the probability when I will get 3 different numbers on the 3 dices. So this thing is 13 to 4, which is 120. So these are my favorable cases, and this is my total sample space. So probability is equal to 120 upon 216. 120 upon 216, and that thing is equal to 5 upon 9. And we know that 5 upon 9 is co-prime because there are no common factors in 5 and 9. So I can say that 5 and 9 are co-prime, and they were asking me q minus p. So 9 minus 5 equal to 4. So 4 is my final answer. So just remember this thing कि जब भी मेरे को साइमल्टेनियस केस का साइमल्टेनियस दिया हो तो आई नीड टू मल्टीप्लाई द आउटकम्स, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस डाइस पे ये आ रहा है या फिर दूसरी डाइस पे वो आ रहा है या फिर तीसरी डाइस पे वो आ रहा है। यहाँ पे और की बात हो रही है, मतलब
अपने को तीनों डेस्क पे एक साथ अपने को नंबर चाहिए. That's why I'm taking multiplication sign. Otherwise, I would have taken plus sign. So 120 upon 216, which is equal to 5 by 9, is my probability. And since these two are co-prime numbers, so I have checked my answer also. So Q minus P is simply equal to 9 minus 5, which is equal to 4. So B part is the right answer. So moving ahead. Okay, now let's do some question on stats. The mean of an item is x bar. If the first term is increased by 1, second by 2, and so on, then what's the new mean? Basically, मेरे को n items दिए हुए हैं यहाँ पे, and they are saying that the mean of those n items is something as x bar, and now I am increasing each item by 1, 2, and so on. तो नया mean क्या होगा मेरे को वो बताना है. तो पहले तो मैं let me write the previous mean equation. X bar is equal to sigma xi upon n, where n represents my number of items and sigma xi is the sum. Now, according to the new equation, they are saying that I am increasing each item by 1, 2, 3, and so on. So basically, I need to add 1 plus 2 up to n times because I have n natural numbers. I have n items upon n. And now again, it is a very simple thing. We did it many times. 1 to n summation is simply sigma n, which is the sum of first n natural numbers. And this thing is given by n into n plus 1 upon 2. N into n plus 1 upon 2. So now since I don't know what is the value of n, so I will take n as it is. So sigma xi upon n plus n into n plus 1 upon 2n. So n will cancel and you will get your new mean as x bar, because this thing was equal to x bar plus n plus 1 by 2. This is your new mean. Just because you need to add the sum of first and natural numbers, this was the only change which you need to make because they were increasing each term by natural numbers only. So x bar plus n plus 1 by 2 is your final answer. Okay. Let's move to the next question. The mean and standard deviation of the marks of 200 candidates were found to be 14 and 50, 40 and 15 respectively. Later, it was discovered that a score of 40 was strongly read as 50. Basically, इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक डिटेल गलत दी रहती है and you need to remove that wrong detail and basically replace it with the correct one. Then you have to calculate new mean and new standard deviation. So यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि initially जो मेरे पास mean था वो wrong है और initial standard deviation is also wrong and I have to tell the correct one. तो firstly मेरे को sigma x निकालना पड़ेगा. Initially it was equal to mean into number of entries. Mean is 40 into total number of candidates are 200. So 40 into 200 was my initial sigma x. Sigma x initial. अब जो correct वाला sigma x होगा, that would be sigma x final is equal to
40 multiplied by 200. Now you will subtract the wrong entry and add the correct one. So wrong entry is 50. So minus 50. And then you will add the correct one, which is 40. So this is my corrected mean, corrected sigma x actually. This is 8,000 minus 10, 7,990. So new mean I can calculate. This thing is equal to 7,990 divided by 200, which is equal to 39.95. 39.95. This is my corrected mean. Now I need to calculate my correct standard deviation, and the formula for standard deviation is something like sigma. Standard deviation formula is sigma x square divided by total number of terms, which is n, minus mean square, which is x bar. So you need to correct sigma x square also in this case. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इनिशियली जो मेरे पास x स्क्वायर था वो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने 40 को 50 रीड कर लिया था. So initial x square is my wrong. I need to calculate correct one. So again do the same calculation. Sigma x square initial कितना होगा? Initially it would be standard deviation plus initial mean. Standard deviation initial था 15. So 15 square is 225 plus initial mean था 40. So 40 square is equal to 1600 multiplied by n, which is 200. So from here you will get 36,500. It is 15 square plus 40 square. So from here you will get incorrect sigma x square as 36,000, 3,65,000. Now to correct it, subtract 50 square, which is 2,500, and add 40 square. So this is your corrected sigma x square. Now you can calculate standard deviation. Why? Because we have corrected our sigma. So just put down the right values and you will get your right answer, which is 36,4100 divided by n, which is 200, minus correct mean, which is 39.95, minus 39.95 whole square. So this thing is equal to 14.98. So 14.98 is my final answer. So I have got my final answer is 14.98. This is my correct standard deviation and correct mean. Okay, so let's move ahead. If a variable takes the discrete values alpha minus 4, alpha minus 7 by 2, alpha minus 5 by 2, alpha minus 3, alpha minus 2, and so on, then the median is how much? So firstly, I know that to calculate the median, I need to arrange my data in ascending order, which means from very lower value to a higher value. So यहाँ पर सबसे lowest value होगी alpha minus 7 by 2, alpha minus 3, alpha minus 5 by 2, and then I will take the increasing values basically.
सो यहाँ पे जो अल्फा माइनस फोर है ये पहले आएगा, ये रॉन्गली यहाँ पे प्लेस्ड है, अल्फा माइनस फोर. Then I need to calculate how many values are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So since we have even number of values, so to calculate the median, I need to take the average of two values, which is n by 2 and n by 2 plus 1, which means fourth and fifth value का मेरे को average लेना पड़ेगा. Why? Because they are even values, even number of terms. हमेशा ध्यान रखना जब भी हमने को मीडियन निकालना होता है. So in median there are two cases. One is for even and other is for odd. In even one, I need to calculate the average of n by 2 and n by 2 plus 1 term. मेरे को इन दोनों terms का average लेना पड़ेगा. But in odd case, I simply need to take the n plus 1 upon second term. This is my median in case of odd number of terms. But since there are even number of terms, 8 terms, so I need to take the average of fourth and fifth term. So here my fourth term would be alpha minus 2 and alpha minus half. So this implies this thing is wrong. This would be positive. So here it is only alpha minus 4, but alpha minus 4 की जगह ये हो जाएगा alpha plus 4. So वो क्वेश्चन में wrongly दिया हुआ है. That thing is equal to alpha plus 4 instead of alpha minus 4. So now you can arrange it in ascending order. You will see your fourth value would be first, second, third, fourth, which is alpha minus 2. So you need to take the average of alpha minus 2 and alpha minus half. So take the average of these two values. You will get alpha minus 5 by 4. So this thing is your median. Okay. So these were the questions which I wanted to solve today. So I hope you got it, especially the probability ones. These were important ones, and especially this question, this mean and standard deviation question. This is asked each and every time in JEE-Main's paper, that initially they give you a wrong value and then they ask to correct it. So practice these kind of questions, and then you can get a good hold on these chapters. So I hope you understood it. So now let's end this session. Thank you.